दोस्तों अभी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है भारतीय पशु पालन के क्षेत्र में कि हमारी जो कैटल फीड की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा चली गई है। दूसरी बात कि फैक्ट्री में क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसा कच्चा माल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जो मुनाफाखोर हैं वो क्या करते हैं कि उसमें गंदी क्वालिटी के माल, बिस्कुट का स्क्रैप और नूडल्स का स्क्रैप, इस तरह से जो फूड इंडस्ट्री के स्क्रैप होते हैं वो सभी मिक्स करके आपको कैटल फीड के शेप में पैक करके दे देते हैं। आपके पास उसकी गुणवत्ता नापने का कोई तरीका नहीं होता। तो सबसे अच्छा तरीका है पशुपालन के लिए कि अच्छी क्वालिटी का वो दाना खरीदे और जो जो उसको सामान उसमें मिक्स करना है, इसमें आप अपना खुद का फार्मूला भी बना सकते हैं। आपके क्षेत्र में जो मटेरियल अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली भी बना सकते हैं। और आप अपने जब आँखों से और अपने हाथों से अपना कैटल फीड बना रहे हैं तो आपको आँख मूंद के आपको बाहर के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना कैटल फीड खुद बनाएं तो आपको एक सही कीमत पे कैटल फीड मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि जब वो आपके हाथों से परचेज किया हुआ है तो आपकी क्वालिटी के लिए आप उसकी खुद गारंटी हो। तो ये सबसे अच्छा बेनिफिट है आपको इन हाउस। अब एक छोटी मशीन है, ठीक है ना, तो आप इसमें अपना जो 20 से लेके 500 पशु तक के जो फार्म है उनको अपना खुद का कैटल फीड बनाना चाहिए। छोटे फार्मर्स के लिए तो थोड़ा मुश्किल होता है कि उनके लिए फिर उनको ढूंढना पड़ेगा छोटी मशीन्स के लिए। पर जिसके पास भी 25 से 500 तक के पशु हैं वो अपना पशु आहार खुद बनाए। मेरी तो यही राय है सभी पशु बंधुओं को। Oh, I'm Carlos from Incomagri, and we are here with Mr. Yadav. We are going to show you how he mix with our vertical feed mixer. Maize 116 kg, barley 30 kg, wheat 37 kg, chickpea powder 62 kg, arhar powder 40 kg, moong powder 40 kg, wheat bran 75 kg, mustard cake 50 kg, methi 7 kg, amla 7 kg, haldi 7 kg, and sodium bicarbonate 5 kg, mineral mixture 9 kg, and we will make a 500 kg batch. So all the cows. So we will differentiate the quantity as per the milking animal. If there is a high milking animal like 15 kg, so we are giving 6 plus kg, and for medium we are giving 3-4 kg per day, and for the low milking like 5 kg we are giving around 3 kg of cattle feed mixture. This is the 500 vertical feed mixer. It's very easy to operate machine. The body is made of polyethylene, so this material is very resistant, does not corrode, does not release any residues of iron or any other metal such other machines can do. Excess of iron could have many damages to the cows. So having the mixture at home is like a desi ghee, not like dalda. Okay, so here we got the final result of the mixture. Look, it's very homogeneous. And then we have all the ingredients. So here we put some mainly ingredients such as maize, wheat, barley, chickpea, pigeon pea, and moong pea. This is in a biggest amount. And then we put some additives such as mineral salt, soda bicarbonate, and other additives to give more immunity to the cows. Such as, can you explain for us? Yeah, this is gooseberry powder, like in Hindi we call amla powder, and this is turmeric powder, like haldi powder, and this is sattavar powder, and this is methi powder. So, and this is mustard cake powder. So all these ingredients are Ayurveda based, and it will improve the immunity of the animal, and good for this currently spreading LSD skin disease. So haldi and amla, they are good source for immunity, and amla is a very good source of vitamin C. And we are also adding this mineral mixture and sodium bicarbonate for the cow's digestion. Okay, and something very important is these ingredients, they go in a small percentage, like 2% of the mixture. And this machine can do it properly and mix it very homogeneous, even the small percentage ingredients. And that's the main thing, because
the animals cannot select the most palatable ingredients. We are using this machine from last 2 years, and before that we are mixing all the ingredients by hand, and that was very difficult for us. Somehow we got information about this Brazilian machine, and now we are very happy of the for the uniformly mixed cattle feed ration. Okay, so now they are making a batch. It's a very simple principle. They were adding the ingredients from the hopper, as we can see now. This is okay, so they are adding now the wheat bran, and the auger inside starts to pull the ration from the bottom to the top. Okay, so here is 3 minutes after adding the last ingredient, and we already have some very homogeneous ration. But our recommendation is to keep it mixing for about 15 minutes to have the most homogeneous ration.